Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about some diseases, benign diseases of the uterus and the cervix. The first benign disease of the uterus is the cervical ectropion. Cervix is the integral part of the uterus. It is composed of collagen tissue and the stroma and few smooth muscles. Cervical ectropion is a benign condition which looks like a raw area on the cervix, and it is commonly known as cervical erosion. मतलब cervical ectropion को cervical erosion भी कहते हैं. और रॉ एरिया क्यों बन जाता है? बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ columnar epithelium on the ectocervix. As you all know that cervix has two parts. One is called the ectocervix and the other one is the endocervix. The endocervix is lined by the columnar epithelium, whereas the ectocervix is lined by the stratified squamous epithelium. Whenever that columnar epithelium um, the the stratified squamous epithelium is replaced by the columnar epithelium. Due to this replacement is called cervical erosion. How the patient presents with the cervical ectropion? The patient presents with an excessive, clear, odorless mucus discharge. चूँकि ये इन्फेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल म्यूकस डिस्चार्ज है, लेकिन ये चूँकि एक्सेसिव है और ऑर्डरलेस है, तो पेशेंट present करता है with excessive, clear, odorless mucus discharge. Normally, it develops under the influence of 3 P's. 3 P's आपने याद रखने हैं. The one is the puberty, the other one is pills, and the third is pregnancy. Normally, pregnancy के दौरान जो stratified columnar epithelium is replaced by the columnar epithelium, leading to a raw area which causes excessive mucus discharge. इसको हम cervical ectropion कहते हैं. And the same process occurs in puberty and pills. Now, this is a picture showing a cervix with raw area around the external os. This is called the cervical ectropion or cervical erosion. What is the transformation zone? Transformation zone is the zone where the ectocervix and the columnar epithelium of the endocervix unites with the stratified squamous epithelium of the ectocervix. वो जो line of junction है, this is called the transformation zone. Now this is a picture showing the endocervical canal, और ये जो square वाला area है, this is the transformation zone. और नीचे विजाइना नजर आ रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो एरिया है जहाँ पे द कोलमनर एपिथेलियम ऑफ द एंडोसर्वाइकल कैनाल इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एक्टोसर्विक्स. इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन. ये जो चेंजेस है, दिस अकर्स इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जोन. What is the treatment of the cervical ectropion? One is the removal of the predisposing factors. प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी तो एक्ट्रोपियन रिजॉल्व हो जाएगा. पिल्स लेनी स्टॉप कर देंगे तो एक्ट्रोपियन रिजॉल्व हो जाएगा. Chlamydia and sexually transmitted diseases screening is done prior to the treatment. इन चीज़ों को क्लेमीडिया और एसटीडीज़ को एक्सक्लूड कर लेते हैं. अगर वो है तो पहले उनको ट्रीट कर लेते हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर ये नेगेटिव आ जाए तो देन सर्वाइकल एब्लेशन इज डन इफ द सर्वाइकल साइटोलॉजी इज नॉर्मल. सर्वाइकल साइटोलॉजी कैसे करते हैं? वी डू द पैप स्मेयर. उसमें अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर अगर एक्सेसिव हो एक्ट्रोपियन और स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व ना हो रहा हो तो देन वी डू द सर्वाइकल एब्लेशन. Ablation means destruction of that raw area. If the cervical ectropion persists, so it may undergoes metaplasia to a stronger squamous epithelium. And the transformation zone undergoes dyskaryosis and malignant change, which needs cervical cytology. डिस्कैरियोसिस किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ द डिसऑर्डर्ड ग्रोथ ऑफ दी सेल्स. और डिसऑर्डर्ड ग्रोथ अगर परसिस्ट करे तो वो मिलिग्नेंट चेंज बन जाता है. उसके लिए वी मस्ट डू पैप स्मेयर, सर्वाइकल साइटोलॉजी. समटाइम्स द कोलमनर ग्लैंड्स विद इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन दे बिकम सील्ड ओवर, फॉर्मिंग द म्यूकस फिल्ड cysts called the Nabothian cyst.
Nabothian cysts are non significant and they do not need any treatment. The other benign condition of the cervix is the cervical stenosis. Cervical stenosis is usually iatrogenic phenomena. It is caused by different surgical events, for example, like cone biopsy, loop diathermy. Both of these processes are done for the pre-malignant diseases of the cervix. Another procedure is endometrial ablation. Endometrial ablation devices are used to decrease the heavy menstrual bleeding. तो ये भी मेनोरेजिया के लिए एक ट्रीटमेंट है जो यूज़ होती है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन. तो इसमें भी अगर एक्सेसिव एब्लेशन की जाए तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल स्टेनोसिस, स्पेशली एट द एरिया ऑफ द इंटरनल os. The treatment of cervical stenosis is surgical dilatation with hysteroscopic guidance under local anesthesia. तो local anesthesia दे के hysteroscopically cervical dilatation कर देते हैं. अगर re-stenosis हो जाए तो this may require hysterectomy to relieve the pain. पेन क्यों होता है? क्योंकि सर्वाइकल स्टीनोसिस में इंटरनल ऑस क्लोज्ड होता है. ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुएशन द ब्लड रिटेन्स इन द यूट्रस, तो उससे हेमेटोमेट्रा हो जाता है और पेशेंट फील्स साइक्लिकल पेन. टू रिलीव दैट पेन सर्वाइकल डायलिटेशन इज डन टू रिलीज दैट कलेक्टेड ब्लड एंड द पेन relieves spontaneously. Now, this is a picture of the cervix showing the internal os and external os. अगर internal os की side पर देखें तो there is stenosis, means वो constrict हो जाता है इसका internal os, तो it which does not allow passage of the regular menstrual blood. तो patient जो है उसमें cyclical pain होगा but there would be no menstrual blood. ये उसकी diagnosis करते हैं इस तरह. This is another picture showing loop diathermy of the cervix for the cervical intraepithelial neoplasia, जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है सर्विक्स की, उसकी ट्रीटमेंट है लूप डायथर्मी. तो लूप डायथर्मी के बाद अक्सर सर्वाइकल स्टीनोसिस हो जाती है. Another benign condition is the endometrial polyps. Polyps क्या चीज़ें हैं? These are discrete outgrowths of endometrium attached by a pedicle. तो polyps जो है वो पेडिकुलेटेड भी हो सकते हैं, sessile भी हो सकते हैं. It can be single, it can be multiple, and it may vary its size. That is 0.5 to 4 centimeter. डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं? अगर पेडिकुलेटेड एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड है, पॉलिप है सॉरी, विच इज़ प्रोट्रूडिंग टू दी इंटरनल ऑज, तो ऑन लोकल एग्जामिनेशन इट कैन बी विजिबल. अगर वो स्मॉल हैं, मल्टीपल हैं, लेकिन इंट्रा यूट्राइन है विच आर नॉट पॉसिबल ऑन लोकल एग्जामिनेशन, देन वी एडवाइज अल्ट्रासाउंड. तो अल्ट्रासाउंड पे वो नज़र आ जाते हैं. दोज विच आर मिस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, तो फिर वो दे आर डायग्नोज्ड ऑन हिस्टेरोस्कोपी. डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी में वो पॉलिप्स नज़र आ जाते हैं. दीज आर डिस्क्रीट एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ्स. If in a woman these endometrial polyps are seen under 40 years of age, तो endometrial polyps may cause intermenstrual bleeding. इसका जो main symptom है जिसके साथ ये present करते हैं, that is the irregular bleeding, heavy menstrual bleeding, intermenstrual bleeding and postcoital bleeding. तो जो अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज वुमेन में एंडोमेट्रियल पॉलिप्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है तो उनको हम मेडिकली ट्रीट कर लेते हैं. अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो देन द treatment is polypectomy. Polypectomy means we remove that polyp from the uterus and the symptoms resolve with the polypectomy. In women over 40 years of age and premenopausal, तो उसमें भी फिर आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया विच इज़ फॉलोड बाय द हिस्टोपैथोलॉजी. इसमें चूंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का रिस्क हो सकता है तो फिर हिस्टोपैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन. And in postmenopausal women, endometrial hyperplasia or malignancy is common. Sometimes endometrial polyps are due to tamoxifen treatment, which is given for breast cancer. They also cause polyps. So in patient में polypectomy is mandatory, और polypectomy के बाद histopathology is also mandatory to exclude endometrial hyperplasia and malignancy.
ये एक पिक्चर है यूट्राइन कैविटी की, विच इज शोइंग थ्री पॉलिप्स। अगर ऊपर वाले आप दो देखें तो दीज आर पेडेंकुलेटेड पॉलिप्स, और ये जो थर्ड वन है नीचे वाला, दैट इज अ sessile polyp, and these polyps are seen in the uterine cavity. Endometrial polyps हैं ये. This is another picture showing an endometrial polyp which is protruding through the cervical canal. ये एक हिस्टेरोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें पॉलिप की पॉलिपेक्टमी दिखाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. Ascherman syndrome. Ascherman syndrome क्या चीज़ है? The fibrosis and adhesion of the endometrium is called Ascherman syndrome, and it is caused by the irreversible damage to the basal endometrium, which do not allow regeneration. नॉर्मली जब डीएनसी की जाती है तो एंडोमेट्रियल की जो ऊपर की दो लेयर्स हैं, स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर, वो रिमूव की जाती है. लेकिन अगर एग्रेसिव या ओवरजीलियस क्यूरेटाज किया जाए और बेसल एंडोमेट्रियम रिमूव हो जाए या डैमेज हो जाए, तो चूंकि वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती तो वहाँ पे फाइब्रोसिस और एडिशन बन जाती है, विच इज़ कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम, एंड इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल शेडिंग. सिम्टम क्या होता है? वो कहती है मुझे मेंस्ट्रुएशन होती है लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है. Reasons are overzealous curettage of uterine cavity during evacuation of retained products of conceptions after miscarriage or after secondary PPH. Secondary PPH भी most common cause जो है secondary PPH का, that is the RPOCs. तो अगर overzealous curettage किया जाए और basal endometrium damage हो जाए तो this causes Ascherman syndrome. इसी तरह endometrial ablative techniques which are done for menorrhagia, they also causes Ascherman syndrome. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंशन. प्रिवेंशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरज़ीलियस या एग्रेसिव क्यूरेटाज ना किया जाए. क्यूरेटाज करें तो शार्प क्यूरेट की बजाय जो ब्लंट क्यूरेट होता है उससे क्यूरेटाज किया जाए. और अगर हो जाए एशरमैन सिंड्रोम, देन द ट्रीटमेंट इज़ हिस्टेरोस्कोपिक ब्रेकडाउन और लाइसिस ऑफ द एडहेशंस. Now, this is a picture. On the left side is showing a normal uterus, whereas on the right side, the adhesions are seen inside the uterine cavity. This is the Ascherman syndrome. And this is the hysteroscopic lysis or breakdown of the Ascherman syndrome. ये उसकी एक पिक्चर है. Adenomyosis. Adenomyosis भी एक benign condition है in which there is presence of endometrial glands within the myometrium. नॉर्मली एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के दरमियान एक डिमार्केशन होती है, लेकिन अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं वो चले जाएं मायोमेट्रियम में तो दे कॉज adenomyosis. The patients are usually multiparous or in their early 40s. तो adenomyosis जो है, it a disease of a multiparous woman. It presents with severe secondary dysmenorrhea and menorrhagia. तो जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करती हैं. ऑन एग्जामिनेशन द यूट्रस फील्स टेंडर, बल्की एंड बोगी. सॉफ्ट और टेंडर और बल्की यूट्रस होता है. डायग्नोसिस कैसे करते हैं? विद द अल्ट्रासाउंड फीचर्स ऑफ हेमरेजिक फिल्ड डिस्टेंडेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. अल्ट्रासाउंड हम एडवाइस करते हैं, उसमें फिर ये एडिनोमायोसिस डायग्नोज होती है. MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. उसमें भी क्या फीचर होंगे? हेमरेजिक फिल्ड डिस्टेंडेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स नजर आएंगे. ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एडिनोमायोसिस में इट इज़ इनफेक्टिव, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है दैट इज हिस्टेक्टमी फॉलोड बाय हिस्टोपैथोलॉजी. तो एडिनोमायोसिस इज़ अ डायग्नोसिस पोस्ट ऑपरेटिव हिस्टेक्टमी डायग्नोसिस है. प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस जो है वो डिफ़िकल्ट है, और जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है दैट इज़ आफ्टर हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द हिस्टेक्टमाइज्ड स्पेसिमेन. ये एक एमआरआई पिक्चर है ऑन द लेफ्ट साइड ए, जिसमें हेमरेज फिल्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, विच इज़ दी एडिनोमायोसिस. नॉर्मल यूट्रस में ऐसे ग्लैंड्स नहीं होते हैं. अगर होते हैं वो सिर्फ एंडोमेट्रियल पोर्शन में होते हैं, मायोमेट्रियम के अंदर नहीं होते हैं.
ये एक पोस्ट हिस्टेरेक्टमी सैंपल है यूट्रस का, और इसका ये कट सेक्शन है जिसमें आपको ये जो ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विद हेमरेजेस फिल्ड क्लॉट्स इनसाइड दी मायोमेट्रियम, वो मायोमेट्रियम तक एक्सटेंड कर गए हैं। थैंक यू।